Hello students, this is Deepak Pandey and in this video lecture of network analysis and synthesis, we will discuss about two-port network. So the first part of two-port network is network function. तो इस part number 1 पे हम network function के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So first thing is what is network function? It is also known as system function. Network function क्या होता है? नेटवर्क फंक्शन हमारे पास में कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स of the system to the Laplace transform of excitation of the system under all initial conditions are zero. So network function क्या काम करता है? Network function relates the response to the excitation in frequency domain. Frequency domain में response और excitation को आपस में relate करने के लिए जिन functions का हम use करते हैं, those functions are known as network function. And in general, network function is response over excitation in frequency domain. Okay, for example, a system like this in time domain analysis, जहाँ पे ET हमारे पास में क्या है? ET is the excitation and RT is the response. Then in frequency domain it is what? ES and RS. और जो नेटवर्क फंक्शन हमारे पास में HS होगा तो ये क्या होगा? ये हमारा RS और ES का क्या होगा? रेशियो होगा. रिस्पॉन्स over excitation. Is that okay? And both should be in frequency domain. So next thing is the concept of वन पोर्ट एंड टू पोर्ट नेटवर्क. तो देखते हैं वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क. सबसे पहले हम पोर्ट के लिए बात कर लेते हैं कि पोर्ट क्या होता है. पोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो ए पेयर ऑफ टर्मिनल थ्रू विच ए सिग्नल में एंटर और लीव द नेटवर्क इज कॉल्ड ए पोर्ट. पोर्ट क्या होता है? पोर्ट पेयर ऑफ नेटवर्क होता है जिससे हम या तो इनपुट दे सकते हैं, अदरवाइज वी विल टॉक अबाउट द आउटपुट. ठीक, तो उस पेयर ऑफ टर्मिनल को हम लोग पोर्ट बोलते हैं. इफ ए नेटवर्क कंसिस्ट ओनली वन पेयर ऑफ टर्मिनल लाइक दिस, देन द नेटवर्क इज सेड टू बी वन पोर्ट नेटवर्क. अगर हम वन पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस कर रहे हैं, वन पोर्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो वन पोर्ट नेटवर्क वो नेटवर्क होंगे जिनमें सिर्फ ऐसे एक सेट ऑफ टर्मिनल होगा. और अगर यहाँ पे हम टू सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात कर लें, देन इट इज सेड टू बी टू पोर्ट नेटवर्क. वी कैन ऑल्सो कंसीडर ए मल्टीपोल नेटवर्क लाइक दिस. तो एक मल्टीपोल नेटवर्क भी हमें मिल सकता है. तो ये हमारे पास में क्या कंडीशन दी गई है? दिस इज फोर पोर्ट नेटवर्क. ओके, ये हमारा फोर पोर्ट नेटवर्क हो गया. तो वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज दोगे तो करंट के लिए बात करेंगे. ठीक, सो नेटवर्क फंक्शन ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क. नेटवर्क फंक्शन वन पोर्ट नेटवर्क के लिए बात करें, सो देयर आर टू सिग्नल्स. फर्स्ट वन इज VT and its excitation is VT is the excitation and IT is the response or the vice versa. कोई भी एक्शन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. Here we are talking about one port network. So one port network, first thing is driving point impedance function. Impedance means impedance is nothing but Z, and Z equals to here driving point impedance function Vs upon Is. So driving point impedance function, Z is a function of frequency as well. So Z is equals to Vs upon Is. Is that okay? All initial condition are set to be zero. सारी initial condition क्या होगी? Set to be zero होगी. Driving point का मतलब समझ लीजिएगा, अगर आप बात कर रहे हो, if you are relating, if driving point के लिए अगर आप बात करो तो it relates voltage and current of same port. ये सेम पोर्ट के वोल्टेज और करंट को क्या करता है? रिलेट करता है. टू पोर्ट में हमें ज्यादा समझ में आने वाला है. नेक्स्ट थिंग इज ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन. सो Ys इक्वल्स टू व्हाट इज एडमिटेंस? करंट divided by the value of voltage. So driving point admittance function and driving point impedance function be like this. Okay, for example,
वी आर डिस्कसिंग हियर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसके लिए हमें इम्पिडेंस और एडमिटेंस बोथ फंक्शन के लिए फाइंड करना है. सो फर्स्ट थिंग इज फॉर ZS. Is that okay? ZS. What about this? This is nothing but the network in time domain. तुम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस और साथ ही साथ सारी इनिशियल कंडीशन जीरो जब सेट करेंगे सो इट मे बी रिप्लेस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन लाइक दिस. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये नेटवर्क हमारा जो नेटवर्क दिया गया था ये नेटवर्क हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. क्यों दिखाई पड़ेगा? इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आर देयर इज नो चेंज इन R, but L1 will be changed by S into L1. Is that okay? और यहां से हमें क्या करना है? ZS के लिए बात करनी. Clear? What about ZS? Here it is I1. What about the potential here? Here it is V1. S as well. यहाँ पे S का फैक्टर दिया गया है. So here ZS equals to nothing but simply V1 upon I1. And what about V1 upon I1? यहाँ साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है it will be equals to R plus S into L1. Is that okay? So for this one port network, the driving point impedance function is like this. And what for YS? YS is what? It is 1 divided by ZS. So it will be equals to 1 upon R plus SL1. Here it will be R1. Okay. So YS equals to this value. Next one is next question. For example, we have to solve it for this. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ये हमें क्वेश्चन दिया गया है. Then what? Again for ZS, for example here it is current I1, V1S, it is S. Then what? इसका हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में जब हम लेके जाएंगे तो it will be what? It will be like this. Okay, resistance no change, there will be no change in resistance. Inductor will be changed by a factor as SL1. और कैपेसिटर कैसे चेंज हो जाता है? 1 अपॉन S इंटू C1 से चेंज हो जाता है. ठीक है. सो हेयर द वैल्यू ऑफ ZS इक्वल्स टू simply the combination here. Combination here means these two are in series combination, these two are in series combination and the parallel combination. Clear? So it is what? It is R1 plus 1 upon SC1, the series combination, parallel to the series combination here, SL1. Okay. So it is equals to what? It is R1 plus 1 upon SC1 multiplied by R2 plus SL2 divided by R1 plus 1 upon SC1 plus R2 plus SL1. So the value of ZS equals to nothing but 1 upon S R1 C1 multiplied by R2 plus SL1 divided by 1 plus R2 plus SL1 plus SR1 into C1. So the driving point impedance function of this particular circuit be like this. Okay. Now next thing is network function of two-port network. So what is two-port network? Two-port network are those networks when there are two set of terminal from which either we can apply the input or we can get the output. Okay. So two-port network ऐसे दिया गया है एक हमारा two-port network and the potentials are V1, V2 like this and the currents are I1, I2 like this. Okay. So next thing is what? What about the first thing? First thing is driving point impedance function. Again, driving point impedance function means it relates
same port quantities. It relates same port quantities. Okay, ये क्या करेगा, सेम पोर्ट की क्वांटिटीज को रिलेट करेगा. सो ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन is, first thing is Z11, it is Z11s equals to V1s upon I1s. सिंस इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस हमारा होता है वोल्टेज अपॉन करंट. फर्स्ट पोर्ट के लिए ये हमें दिया गया है, ठीक है. तो ये हमारे पास में कंडीशन दी गई. एंड नेक्स्ट वन इज Z22. So it is equals to what? It is equals to V2s upon I2s. ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन. क्लियर. वन मोर थिंग, जब हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2 की बात करेंगे तो पोर्ट 1 को फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर जनरल पर्पस शुड बी कंसीडर एज इनपुट एंड पोर्ट 2 को शुड बी कंसीडर एज आउटपुट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पिडेंस फंक्शन, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस फंक्शन, और ये हमारा हो जाएगा ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस फंक्शन. ठीक. नेक्स्ट थिंग इज ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन. व्हाट इज एडमिटेंस? एडमिटेंस इज y s इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय v. लेकिन यहाँ दो पोर्ट हैं और ये ड्राइविंग पॉइंट की बात कर रहे हो, एंड ड्राइविंग पॉइंट रिलेट्स सेम पोर्ट क्वांटिटीज. तो सेम पोर्ट क्वांटिटीज के लिए हम जा रहे हैं. तो सेम पोर्ट क्वांटिटीज हमारे पास में जो पहला आया वो आया हमारे पास में y11s इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू I1s अपॉन V1s एंड y22s equals to I2s upon V2s. Okay, once again driving point, same port quantities. Clear. Admittance and impedance according to that. First, next one is ये किसके लिए, फर्स्ट पोर्ट के लिए. एंड फर्स्ट पोर्ट हम इम्पिडेंस कंसीडर, इनपुट कंसीडर कर रहे हैं. सो इट विल बी ड्राइविंग पॉइंट input admittance function, and this will be driving point output admittance function. Is that okay? Next thing is transfer. ट्रांसफर फंक्शन पे याद रखो कि ट्रांसफर का वर्ड जहां पे यूज होएगा when b relates different port quantities. ठीक है, जब हम डिफरेंट पोर्ट क्वांटिटी को 1 से 2 को रिलेट करते हैं तो वहां हम ट्रांसफर वर्ड का यूज करते हैं. सो ट्रांसफर इम्पिडेंस फंक्शन, अगेन इट शुड बी इम्पिडेंस. ठीक है, तो इम्पिडेंस होगा, तो इम्पिडेंस में पहला जो हमारे पास में आता है ये आता है क्या, इट इज इक्वल्स टू Z21s इक्वल्स टू V2s अपॉन I1s. देखिए वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट ऑलवेज इम्पिडेंस, हमेशा ये इम्पिडेंस है. लेकिन ये क्या कर रहा है, टू सेकेंड पोर्ट वोल्टेज एंड फर्स्ट पोर्ट करंट को रिलेट कर रहा है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म ट्रांसफर. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द जनरल ऑब्जर्वेशन, HS इक्वल्स टू RS डिवाइडेड बाय ES. अब ES क्या है, एक्साइटेशन. RS क्या है, रिस्पॉन्स. तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसफर फंक्शन के केस में या नेटवर्क फंक्शन के केस में डिनोमिनेटर विल रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन विल रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरेटर, सॉरी, denominator represent the excitation and response is in numerator.
ओके, तो पहले रिस्पॉन्स का केस नहीं आएगा, पहले आएगा एक्साइटेशन, फिर आएगा रिस्पॉन्स का केस। दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2 हेयर, ठीक है। तभी इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या, इट इज नोन एज फॉरवर्ड impedance function. Okay, next one is Z12S, and Z12S equals to V1S divided by I2S. It is similar to that one. It is known as reverse impedance function. Okay, next thing is transfer admittance function. Transfer admittance function means it will be Y as I divided by V. तो पहला ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन के लिए बात करें तो ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन फर्स्ट वन एज y21s, it is equals to I2s divided by V1s, called since excitation is for port number 1 and response is getting at port number 2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी पे नेक्स्ट बात करें तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, y ऑफ 12 y12s, it is equals to I1s upon V2s, and it is known as reverse transfer admittance. Okay, unit ohm inverse. Next thing is voltage ratio transfer function. Voltage ratio transfer function is GS. It may be represented as V2s upon V1s. This will be G21s. What about this? Again, कैसा, ये हमारा पास में होगा फॉरवर्ड वोल्टेज गेन एंड इट मे बी G12s. ये क्या हो जाएगा, V1 upon V2s. It will be what, reverse voltage gain. Okay, next thing is current transfer function, current ratio transfer function, current ratio transfer function alpha s. So alpha 21s will be I2s upon I1s. What about the nomenclature, forward current gain, and next will be I12s. It will be equals to I1 upon I2s. नाम क्या होगा इसका, रिवर्स करंट गेन. इज दैट ओके? तो ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन फॉर टू पोर्ट नेटवर्क. नाउ डिस्कस वन प्रॉब्लम हियर. एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में सिचुएशंस दी गई हैं. ओके, सो ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन, this obtain the transfer function V2 divided by V1s. तो देखिए V2s divided by V1s, that means ये जो हमारा सर्किट दिया गया है it should be converted into frequency domain. तो frequency domain में इसका सर्किट क्या होगा, resistance में not replaced by any other thing, resistance को resistance R1 will be replaced by R1, R2 will be replaced by R2, ठीक है, R1 will be replaced by R1,
there is no conversion, R2 will be replaced by R2, but C will be replaced by 1 upon SC. ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरीके से, ये सर्किट हमारा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द सर्किट बी लाइक दिस, इफ द वैल्यूज ऑफ करंट इज I1 एंड हियर इट इज I2। तो देखिए कंसीडर करते हैं, तो इधर पे हमारे पास में सिचुएशन क्या है, हियर इट इज V1 equals to what, V1 equals to, what about this, these two are in parallel, so parallel combination of R1 parallel to 1 upon SC, then its series combination with R2. So on solving it, it is what, R1 multiplied by 1 upon SC plus R1 plus 1 upon SC plus R2. Okay, so it is equals to what, it is equals to R1 divided by 1 plus S R1C plus R2, and one more thing is here, multiplied by the value of I1, so it is multiplied by the value of I1 and it is multiplied by the value of I1. It is the value of V1 here, equation number first. Next thing is, when this V1 I1 current passes through this particular circuit, यहाँ से I1 जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी तो I1 जा रही होगी, ठीक है, तो इस करंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ V2 का क्या कंडीशन है, हियर V2 equals to what, V2 equals to, sorry, I1 multiplied by R2, it is set to be 0. Clear? So I1 equals to this, I1 equals to this value, it is equals to what, it is R1 plus R2 1 plus S R1C divided by what, it is 1 plus S R1C, ठीक, I1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में V1 multiplied by the value of R2 here. So here from above we have the result as V2S upon V1S, it is equals to R2 R1 R2, sorry, when we solve it we get R2 plus S R1 R2C divided by R1 plus R2 plus S R1 R2 into C. So this is the final answer. Desired answer of this particular question be like this. Okay. The next thing is, for example, there is one more question where we have to solve it for same result. Same result के लिए हम अगर इसको solve करने जा रहे हैं तब हम इसको कैसे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि first thing is we have to convert this circuit into corresponding frequency domain circuit. तो इस frequency domain circuit के लिए अगर हम बात करें then what, it will be equals to, for example here is the current I1, then it will be V1 equals to, this is the frequency domain circuit, okay, V1 equals to the series combination of the parallel combination of this R1 multiplied by 1 upon SC1 divided by R2 multiplied by 1 upon SC1, the parallel combination, then the series combination of
this. Series combination is R2 plus 1 upon SC2 and its multiplication with the value of I1 here. Okay. Next thing is, for example, this is equation number first. Next thing is, what about the value of V2? Here, V2 equals to what? V2 equals to this value, the potential across this, and the current passes to this one is I1 current जिसे पास कर रही है इधर पे. तो हमारे पास में V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V2 equals to R2 plus 1 upon SC2 multiplied by the value of I1. Okay, so from equation number 1 we have, what is the value of V2? V2 equals to R2 SC2 plus 1 divided by S of C2 multiplied by V1 equals to I1 equals to V1 divided by this whole value, means R1 divided by SC1 divided by, sorry, SR2 C1 plus 1 divided by SC1, that will be cancelled out, plus R2 plus 1 upon S of C2. Okay, so on solving this we can get the value of V2 and V1. Now it is your work to solve it and write the answer in comment box. Okay, so please stay tuned to get the forthcoming video lectures on network analysis and synthesis. Subscribe the channel, please like the video and press the bell button as well. Thank you so much. All the very best. God bless you.